कैट की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है, आप अपना स्कोर्स देख चुके होंगे, नहीं देख पाए हैं तो मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, बट वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अब जो भी स्कोर आप ला रहे हैं अगले 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, जैट तक, स्नैप तक आप क्या कर रहे हैं। वट एवर आर योर डेली एक्शंस फ्रॉम नाउ एवरी डे इज वॉट इज गोइंग टू गवर्न योर सक्सेस एंड योर आउटकम्स फ्रॉम दिस ईयर। इन दिस वीडियो आई विल बी स्पीकिंग अबाउट what is your score, what should you do, what are your next steps, what would have been my next steps, what would have I advised to my students, so that my dear friends, even if you are not scoring very well, if you are saying that sir quant में कम रह गया, DILR में कम रह गया, VRC में कम रह गया, overall ही नहीं हुआ, अच्छा क्या करूं, ये वीडियो आपके लिए है, watch it up till the end. I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I am the founder of Creatum and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. Now let's first of all quickly understand that अगर अभी तक आपने अपना रिस्पॉन्स शीट नहीं चेक करा है तो कैसे कर सकते हैं। लॉग इन टू imcat.ac.in which is the site, log in with your account, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाइए, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार आपको पेज, CTRL+F क्लिक करके पेज पे सर्च करिए DGIALM, नॉट डिजिटल, DGIALM और HTTPS। इनमें से कोई भी दो एक चीज जब आप when you will search, what you will see is that you will find a link and that link would look something like this, which you can see on your screen, and that will open up your response sheet. Now the point is, what is your score? How do you find it? I would recommend you to go to CL score calculator. They will give you a quick analysis of what your score is. All you have to do is take the URL of your response sheet and paste it there. Second thing what I'll say is that now wait for a day, not a day but wait till the evening at least, because now हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो प्रिडिक्टेड परसेंटाइल्स थी कि जी 99 के लिए ये स्कोर और इसके लिए ये स्कोर, वो अब शाम तक रिवाइज होगा और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, वो अभी से ही होना स्टार्ट हो गया है। बिकॉज द मोर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट accumulates data of the scores, they get more practical in terms of the score. And what you will realize, what we've started to see already, is that while a lot of coaching institutes had predicted that, you know what, the paper was so easy that the scores will go much higher for the same level of percentile, the score will go much higher, you will see that it's not so much high, it's only 1 or 2 questions up and down. Basically that is the thing. So therefore again I would recommend to you go to CL's score calculator. But now that's not the point, you might have already seen it, and the point is what you have to do, what are your next steps, how can I help you in all of this. See, one thing, all students irrespective of whether you are scoring a 99.9 percentile, a 99.5 percentile, please apply for ZAT immediately. You need to keep up. अब किसी के लिए ZAT बन जाएगा एज अ बैकअप, किसी के लिए फ्रंटलाइन कॉलेज। इनफैक्ट ZAT बैकअप हो सकता ही नहीं है। अगर आपके 99.9 परसेंटाइल भी आ रहे हैं और अगर आपको IIM अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता तीनों जगह से कॉल आ रहा है, फिर भी आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरा इज अ बैकअप, बिकॉज फॉर ऑल यू नो अगर आपका इंटरव्यू कहीं क्लियर नहीं हुआ आउट ऑफ दोस 3 B schools, I should not say that, but you should be prepared for all eventualities. It makes no sense for you to not give the XLRI interview and go there, because that is comparable to an ABC and ISB. But now if you're a student who's scoring above 95 percentile overall, there are 3 things which I would recommend to you immediately. Please join a personality development program immediately, tomorrow, day after. Start your PDP prep, because that is important. You need to be prepared, you need to have an edge over others. 95 के ऊपर आपको कुछ B schools unlock हो जाएंगे. Again, depending on what profile you have, this and that, what profile you have, I'll make a separate video for that. And also what you can do is book a one-to-one call with me for any query. You and I would be live on a video call and we'll talk about whatever problems, queries you have. We will do all of that. You can find the link to that in the description. Moreover, along with your PDP, or if you're still thinking कि अभी PDP join करके क्या है, उससे पहले join my course called MBA Specialization Selector. It's a host of videos, lot of videos in which what it will help you is that you will know what are you supposed to do, what do you want to do after your MBA. That is going to help you get clarity, and whenever you will be appearing for your PDP mock interviews, it will give you much more clarity. There's a host of courses under the name of How to Be School on my website called creatum.co. Join that.
दैट्स दैट। 95 से कम है, अब इसमें दो चीजें हैं, अगर 95 से कम है मगर आपके ड्रीम बी स्कूल उस परसेंटाइल पे आ जाते हैं, से सपोज यू माइट से कि सर मुझे नहीं एम करना है फॉर एन IIM बैंगलोर, कलकत्ता, LK, उदयपुर नहीं करना है, मुझे जो भी मेरे थे एस्पिरेशंस वो यहाँ पे हो रहे हैं फुलफिल, अगर है फिर भी मैं कहूँगा ज्वाइन PDP, बिकॉज अब आपको इंटरव्यू कन्वर्ट करना ही करना है। सेकेंडली ज्वाइन MBA स्पेशलाइजेशन सेलेक्टर, बिकॉज वो PDP के साथ है। इनफैक्ट दिस शुड हैपन बिफोर PDP, एनी PDP प्रोग्राम यू ज्वाइन दिस, बिकॉज दिस विल गिव यू क्लैरिटी। इसमें और भी बहुत चीजें, आई विल शो दैट टू यू। इफ नॉट, अगर आपके ड्रीम बी स्कूल्स रीच में नहीं है, सिंपली आई विल से क्रैक ZAT and change your story. It's my story. In my first attempt of CAT in 2014, my CAT percentile was 84 percentile. I am a general engineering male. But in the same year, within 5 weeks, my ZAT percentile was 98.3. The point which I'm trying to make is that this story can be yours as well. XLRI का मुझे कॉल था यहाँ पे। Again, wait for my detailed ZAT plan. अभी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें I've given you an integrated Snap and ZAT plan. Now a video will come standalone for ZAT as well. But don't wait for that. Go to my last video, check out my integrated prep plan for Snap and ZAT, because both the things have to happen साथ साथ। book a call for any query. One thing which I'd like to say now so that it gives you some sense also, ZAT के लिए अब आपको करना क्या है। देखिए ZAT में क्या है, CAT prep जो भी आपने करी है, add two things to it. One major thing is that DM, decision making section, needs to be prepared separately. How do you do it? Last 5 years 6 years के previous year questions you can find anywhere. You can find them as mocks on CL's free account. You can do all of that, do that, take that. That is all you need. Very frankly, if you were to ask me, that is all you need. आपको कुछ और कहीं से करने की जरूरत नहीं है, because they also have video explanations. Secondly, what you also need to understand is that ZAT is equal to CAT plus decision making as well as some bit of grammar as well. तो अंग्रेजी में ग्रामर देख लीजिएगा थोड़ी। अगेन कैसे देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल गिव यू हैंग ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, एंड ग्रामर क्वेश्चंस आर इजी. यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दोस 2 or 3 ग्रामर क्वेश्चंस. RCs में कई दफा पोएम्स भी आ जाती हैं, आएंगी, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं, मॉक टेकिंग. ZAT की प्रिपरेशन अब मॉक टेकिंग है. स्नैप से पहले 2 मॉक लिख लीजिएगा ZAT के. इफ यू वॉच माई लास्ट वीडियो 3 days बैक, उसमें ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं, सो इट्स नॉट समथिंग विच इज नाउ न्यू. आई एम सेइंग ZAT इज ऑल अबाउट दैट. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ZAT, क्या करना है, गो डाउन इन द कमेंट्स एंड इन्फॉर्म मी. व्हाट वाज माय स्कोर? आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक आइडिया ऑफ दैट. हियर इज व्हाट माय स्कोर इज. आई अटेम्प्टेड VA RC and my score is 32. I am expecting somewhere around a 96 or a 97 percentile in that. I spent some समय in also analyzing the whole exam कि कहाँ पे क्या है, which I am supposed to do as an educator. So वहाँ पे I got stuck. And moreover, DI, LR and QA, I did not mark my answers, but in DI, LR, I attempted some 3 sets. In Quant, I attempted 3 sets and 1 more question, I believe. And in Quant, I had attempted 9 questions. That's the thing. I did not mark the answer. So now with this, you know what you are supposed to do. You are supposed to, the bottom line of this video, I wanted to, I'll just give it to you straightforward. Apply for ZAT, prepare for ZAT, irrespective of who you are. It is as simple as that. If you were expecting कि मैं कुछ बड़ी नई अतरंगी सी चीज I'll share, makes no sense. Crack ZAT. Snap के लिए अप्लाई करा है, Crack Snap. मेरा इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान देख लीजिए फॉर स्नैप एंड ZAT. और ZAT के लिए स्टैंड अलोन प्लान भी वहीं से ही हो जाएगा. ZAT में DM सेक्शन, ग्रामर, पोएम, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है. Mocks, attempt them as mocks on CL's website. They'll give you video solutions as well. That is all you need. ZAT is going to be easy. ZAT is easy. It requires you to maintain your calm. Cover up your weak areas also. So now you know कि यार weak areas भी हैं. अगर doubt है BB, because अब ये what I have said is a very generic thing. If you want specific things, book a call with me, or you could just join my free Telegram group. We can have a chat over there. Thanks a lot and goodbye.